पाकिस्तान में डेब्यू के ठीक बाद सचिन का ये पहला ऐड था. It marked the beginning of an era where Indian cricket found money. Lots and lots of money. And look at this. Gavaskar. But marketing the sunny side wasn't truly discovered until Gavaskar padded up. Till 70s, Indian batsmen had a poor reputation against pace. तो जब गावस्कर ने अपने डेब्यू सीरीज में कैरेबियन पेसर्स के अगेंस्ट बैक टू बैक 4 सेंचुरीज मारे तो कैरेबियन सिंगर्स गावस्कर के हीरोइक्स पर गाने लिखने लगे. और इंडियन ब्रांड्स एड्स. गावस्कर became India's first cricketing superstar. कुछ सालों में ब्रांड्स को कपिल देव के ऑलराउंड एबिलिटीज में एक और हीरो मिल गया, लेकिन इन दोनों हीरोज का क्रिकेटिंग डिफरेंस इनके फैन बेस में भी झलकने लगा था. गावस्कर's professionalism was for the sophisticated market, whereas Kapil's charm appealed to the common man. लेकिन ब्रांड्स को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा फॉर हीरो विथ एन ऑल राउंड पॉपुलैरिटी. सचिन अपने स्कूल डेज से ही हेडलाइंस में आ चुके थे. Sachin, you must be getting tired now of people asking you questions and giving interviews or what? No, I think this is just start. So a year later, when he made his international debut at the age of 16, everyone wanted to see how the boy wonder would fare. But the Indian team went to Pakistan at a time when the Indian public went to vote. इसलिए उस वक्त देश के इकलौते चैनल दूरदर्शन ने पहले 2 टेस्ट मैचेस को टेलीकास्ट करने के बजाय प्री इलेक्शन प्रोग्राम्स को कवर किया. लेकिन इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ा बिकॉज इट वॉज द 4th टेस्ट दैट मेड सचिन द स्टार. सियालकोट के 3rd इनिंग में जब सचिन क्रीज पर आए तो इंडिया वॉज स्ट्रगलिंग एट 38 विद 4 विकेट्स डाउन और आते ही वसीम वेलकम्ड हिम विद अ डेडली बाउंसर. बट इट वॉज वकार हु मैनेज्ड टू ब्रेक हिज नोज. Tendulkar, he doesn't like it quick at all. I think he may have taken that on the face. Take a look at it. Everyone expected the 16-year-old to leave the ground, लेकिन सचिन ने सिर्फ बैंडेड लगवाकर फिजियो को अकेले रवाना कर दिया. तो वकार ने दोबारा बाउंसर किया, but this time Sachin ducks it well and flicks the next delivery for a boundary. He goes on to score his 2nd half century in the series and wins his first TV commercial. Band-Aid, the first name in first aid. इसके कुछ महीने बाद he gets selected for the England tour and on the final day at the Old Trafford he became the youngest Indian to score an international century. पूरे 5 दिन चले इस टेस्ट मैच में 6 प्लेयर्स सेंचुरी करते हैं, लेकिन जब मैन ऑफ द मैच चुनने की बारी आती है तो अजहरुद्दीन, गूज और एथरटन के बजाय सचिन के मैच सेविंग एफर्ट को पिक किया जाता है और प्राइज में मिलता है एक शैंपेन बॉटल दैट ही कुडंट ओपन एज ही वाज स्टिल अंडर एज. लेकिन इंग्लिश मीडिया की नज़र सचिन के मैच के दौरान पहने पैड्स पर पड़ती है. गावस्कर का पैड जो 14 साल के सचिन को गिफ्ट में मिला था. In sports this week, we focus on a new star in international cricket. He's the youngest player in 25 years to score a century in Test cricket, and he's said to be another Gavaskar in the making. Sachin Tendulkar, the boy wonder of Indian cricket. Well, he's a Kar. He's not a Gavaskar. He's a Tendulkar. Yes, and I think he will be a name that might perhaps make you even forget Gavaskar. And suddenly, Gavaskar fans find a new hero. गावस्कर का ये स्पिरिचुअल सक्सेसर अगले 2-3 सालों में कपिल देव के साथ मिलकर पाकिस्तान के अगेंस्ट इम्पोर्टेंट मैचेस जितवाता है. दे बैट टुगेदर, दे बोल टुगेदर एंड सेव द डे अगेंस्ट देयर आर्क एनिमी. तो बताया जाता है कि इन दोनों की इस एनर्जी का राज एक ही है. Boost is the secret of my energy. Our energy. Energy by Boost. एंड नाउ कपिल फैंस गेट अ न्यू हीरो. इसी दौरान मनमोहन सिंह इकोनॉमी खोलने का फैसला करते हैं. India is on the move again. We shall make the future happen. और दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनीज को करोड़ों नए कंज्यूमर मिल जाते हैं और इतने बड़े पॉपुलेशन तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए ऑल द नीड इज फिल्म एक्टर्स की पॉपुलैरिटी उनके पर्टिकुलर रीजन तक लिमिटेड थी. क्रिकेटर्स में भी गावस्कर वाज अ सुपरस्टार एंड कपिल वाज अ चैंपियन, लेकिन दोनों ही किसी एक पर्टिकुलर क्लास में पॉपुलर थे. बट सचिन की पॉपुलैरिटी में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं था. ही वाज द बॉय नेक्स्ट डोर. एम्ब्रोस का रनअप शुरू होते ही टीवी के सामने आंटियों का प्रेयर शुरू होता था. अगर वो 6 मार के विंडशील्ड तोड़ दे तो अंकल लोग खुशी से उन्हें पेप्सी पिलाते थे.
और वहीं बच्चों के लिए ही वॉज द एल्डर ब्रदर, द रोल मॉडल। 94 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेकेंड ओडीआई में सचिन फाइनली गॉट टू ओपन द इनिंग्स। He scored 82 at a strike rate close to 170 that set the trend for aggressive batting in the power plays. इसके बाद सचिन का न सिर्फ एवरेज डबल हुआ बल्कि एड्स भी डबल हो गए। 96 वर्ल्ड कप से कुछ महीने पहले he signed a 5-year contract worth 30 crores। आज के टाइम में शायद 150 करोड़ से भी ज्यादा होगा। 22 साल के लड़के के पॉकेट में इतना बड़ा अमाउंट देखकर सभी दंग रह गए। इसके एक साल बाद ही he gets appointed as the full-time captain of the national team, जिससे पब्लिक का एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। But this time he failed and he failed big time। एक तरफ तो फैंस का बबल बर्स्ट होता है और दूसरी तरफ मार्केट का, इसलिए ब्रांड्स भी नए प्लेयर्स में नए हीरोज ढूंढने लगते हैं। When Ganguly became Sachin's opening partner, he was hitting long sixes for fun। That's it, that's another one, that's a big hit, all the way up the roof again. Oh, he loves that roof, he loves that roof. That's 3 on the roof, 3 lost balls. That's going to be called Ganguly's roof. Getting back-to-back man of the match in white ball and back-to-back centuries in tests। And another man of the match for the Prince of Kolkata, his 3rd in a row। As I said earlier, we have a secret weapon, Sourav Ganguly, who can bat as well. So he did the job for us. But it was Dravid who caught the attention of brands। Rahul Dravid, he's still practicing। नया है, फिर स्टाइल मारने लगेगा। लॉर्ड्स में गांगुली के साथ डेब्यू के बाद द्रविड हैड ओनली 1 मेमोरेबल नॉक फॉर द नेक्स्ट 2 years, लेकिन रीबॉक ने उन्हें ऑलरेडी द वॉल बुलाना शुरू कर दिया था। और इधर पेप्सी भी अपने सचिन द बॉय नेक्स्ट डोर को भूलकर द्रविड द जेंटलमैन पर फोकस करने लगा। See, Rahul's not like that। तो पेप्सी क्यों पी रहा है? Hey, gotta keep a cool head. I'm sorry। Right? Generation Next। ऐसा नहीं था कि द्रविड हैड आउटक्लास सचिन। द फेल्ड कैप्टन स्टिल हैड द मोस्ट टेस्ट रन्स फॉर एन इंडियन बैट्समैन विद द हाईएस्ट एवरेज, लेकिन इसके बावजूद द्रविड वाज प्रोजेक्टेड एज अ पैरेलल। And the brand Tendulkar was no more the undisputed king of the market. So next year he decides to be the god instead। First he scores 3 consecutive test centuries against peak Australia। फिर कोका-कोला कप में ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 और मुलाकातों में he again hits back-to-back centuries when his teammates on the other end are having hard time even saving their wicket। In the Desert Storm, he single-handedly wins the tournament। But the headlines are about him making his debut in Vaughan's Nightmares। कुछ महीने बाद he captains the rest of the world team in Princess Diana Memorial Match, where he scores his only century at Lord's and gets the man of the match। इसके अगले ही महीने he is invited to Bradman's 90th birthday celebration, क्योंकि the greatest of all time को सचिन की बैटिंग में अपनी झलक दिखती है। I've only seen Tendulkar on the television। And I was very, very struck by his technique। I never saw myself play, but I feel that this fellow is playing much the same as I used to play। It was huge in India। Everybody in India said, right, who's the greatest there's ever been? There's Bradman। And now Bradman saying, this kid plays like me? And suddenly the parallels with Bradman started to emerge। इसलिए अगले साल के वर्ल्ड कप कैंपेन के दौरान इस कोट इमेज पर पेप्सी 3 एड्स बनाती है। एक में सचिन का पॉपुलैरिटी दिखाया जाता है, दूसरे में कार्ल हूपर और शेन वॉर्न पूरी कोशिश करते हैं कि सचिन वर्ल्ड कप ना खेल पाए। मैं कौन हूँ? Esquito Gay। But Sachin turns their plan on its head। मेरी पेप्सी। Where are you going? Oh, Praji। ओए सचिन चार तो हो पका दिया ना। And now the Badshah of Bollywood can't get a can of Pepsi। चल, footplay। Okay। So he impersonates Sachin। Yes। Sachin, morning, sir। Madam Sachin, you're on। On? But no one can replace Sachin। Hi, Sachin। Sachin। I'll take it from here। Thanks। Thanks। All the best। But as the millennium turned, India found new heroes and their boss Ganguly, who was making headlines for bullying the bullies।
पेप्सी भी गांगुली के लीडरशिप को एक्नॉलेज करती है। दादा, बंगाल टाइगर तो आप ही हो। लेकिन अगर एड में सचिन भी हैं तो टैगलाइन तो वही बोलेंगे। ये प्यास है क्रिकेट की, पेप्सी, ये प्यास है बड़ी। आगे चलकर धोनी के लीडरशिप में टीम 28 साल बाद वर्ल्ड कप भी जीतती है, लेकिन हेडलाइंस कप से ज्यादा सचिन को उठाने की बनती है। इसके कुछ साल बाद ही सचिन के रिकॉर्ड्स को कोहली चेस कर रहे होते हैं, इसलिए सचिन के ब्रांड्स भी अब कोहली को चेस कर रहे होते हैं। MRF genius. Great things have been done with it. और इन सारी गुस्ताखियों के बावजूद 90s के क्रिकेट फैंस के लिए द किंग हैज टू बो डाउन। मास्टर का 50वां शतक उन्हें मास्टर ब्लास्टर से एक कदम और आगे ले गया। I think most is the secret of his energy. So